Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel Kashmiri Students. So guys, इस वीडियो में हम मूल कंसेप्ट के इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो JKBOP एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स एंड SKUAST कश्मीर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर UG प्रोग्राम्स इन BSc डिग्री और नर्सिंग एक्स्ट्रा के लिए या CUET के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और ख़ासकर जो एग्ज़ाम्स लाइक JKBOP एंड SKUAST है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हर एक चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not a unit for measuring the amount of substance? Option A gram, option B mole, option C liter, option D Kelvin. So the right answer is option C, that is liter. Question number 2, Avogadro's number represents the number of atoms in 1 gram. Question number 2, Avogadro's number represents option A the number of atoms in 1 gram of an element, option B the number of molecules in 1 mole of a substance, option C the number of protons in one atom of an element, option D the number of neutrons in one atom of an element. So इसका right answer बनता है option B, that is the number of molecules in 1 mole of substance. Question number 3, how many moles of oxygen are present in 64 grams of O2? Option A 1 mole, option B 2 moles, option C 3 moles, option D 4 moles. So इसका right answer बनता है option B, that is 2 moles. Question number 4, which of the following represents the correct relationship between grams and moles? Option A moles is equal to grams by molar mass, option B grams is equal to moles into molar mass, moles is equal to grams into molar mass, ऑप्शन डी ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स बाई मोलर मास। सो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 5, द मोलर मास ऑफ वाटर H2O is approximately 18 gram per mole. How many grams are there in 2 moles of water? Option A 9 grams, option B 18 grams, option C 36 grams, and option D 72 grams. So the right answer is option C 36 grams. Question number 6, what is the percent composition of carbon in glucose C6H12O6? Option A 25%, option B 33.3%, option C 50%, option D 66.7%. So इसका right answer है option D, that is 66.7%. Question number 7, how many atoms are present in 0.5 moles of sodium, that's Na? Option A 3 into 10 raised power 23 atoms, option B 6 into 10 raised power 23 atoms, option C 1.2 into 10 raised power 23 atoms, and option D 2.5 into 10 raised power 23 atoms. So इसका right answer बनता है option B, that is 6 into 10 raised power 23 atoms. Next question, question number 8, the empirical formula of a compound is CH2O and its molar mass is 180 gram per mole. What is its molecular formula? Option A CH2O, option B C2H4O2, option C C6H12O6, option D C8H16O8. इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज C6H12O6. क्वेश्चन नंबर 9, a sample of compound contains 2 moles of carbon, 4 moles of hydrogen, and 2 moles of oxygen. What is its empirical formula? Option A CH2O, option B C2H4O2, option C C6H12O6, option D C8H16O8. इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज CH2O. क्वेश्चन नंबर 10, द molar mass of compound is 120 gram per mole and its empirical formula is CH2O. What is its molecular formula? Option A CH2O, option B C2H4O2, option C C6H12O6, option D C8H16O8. इसका राइट आंसर बनता है C6H. Next question, which of the following is defined as
the amount of substance that contains the same number of entities as there are atoms in 12 grams of carbon 12. Option A atomic mass, option B molar mass, option C Avogadro's number, option D mole. इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट्स मोल. Next question. How many atoms are present in one mole of carbon dioxide, that is CO2? Option A 6.02 in 10 raised power 23 atoms. Option B 3.01 in 10 raised power 23 atoms. Option C 1.20 in 10 raised power 24 atoms. And option D 2.50 in 10 raised power 23 atoms. Option C is the right answer, that is 1.20 in 10 raised power 23 atoms. Next question. The molar mass of nitrogen gas, that's N2, is 28 grams per mole. How many grams are present in 2 moles of nitrogen gas? Option A 14 grams, option B 28 grams, option C 56 grams, option D 32 grams. इसका right answer बनता है option C, that's 56 grams. Next question. What is the molar mass of water? That's H2O. Option A 16 grams per mole, option B 18 grams per mole, option C 20 grams per mole, option D 22 grams per mole. So इसका right answer बनता है option B, that's 18 grams per mole. Next question. How many moles of oxygen atoms are present in 5 moles of carbon dioxide, that is CO2? Option A 5 moles, option B 10 moles, option C 2.5 moles, and option D 15 moles. So इसका right answer बनता है option B, that's 10 moles. Next question. What is the percentage composition of carbon in carbon dioxide? Option A 12.5%, option B 25%, option C 50%, option D 75%. इसका right answer बनता है option D, that is 50%. Next question. A sample of magnesium chloride MgCl2 weighing 95 grams contains how many moles of magnesium ions? Option A 0.5 moles, option B 1 mole, option C 2 moles, option D 3 moles. So इसका right answer बनता है option B, that's 1 mole. Next question. How many atoms are present in 2 moles of hydrogen gas, that's H2? Option A 2 atoms, option B 4 atoms, option C 6.02 into 10 raised to 23 atoms, option D 1.2 into 10 raised to 24 atoms. So इसका right answer बनता है option B, that's 4 atoms. Next question. The molar mass of sulfuric acid H2SO4 is 98 grams per mole. How many grams are present in 0.5 moles of sulfuric acid? Option A 24.5 grams, option B 49 grams, option C 74 grams, option D 98 grams. So इसका right answer बनता है option B, that is 49 grams. Next question. How many moles of oxygen gas O2 are required to react completely with 2 moles of magnesium Mg to form magnesium oxide MgO? Option A 1 mole, option B 2 moles, option C 3 moles, option D 4 moles. So इसका right answer बनता है option B, that's 2 moles. सो इसी के साथ ही ये वीडियो एंड हो जाती है. सो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम मोल कंसेप्ट. केमिस्ट्री के चैप्टर 1 है मोल कंसेप्ट. इससे 2 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका Jkbopee एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या कोई भी नर्सिंग के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या SKUAST जम्मू या SKUAST कश्मीर का एंट्रेंस हो, तो इससे 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, और इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आने के चांसेस है. इसी तरह हम बाकी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं नेक्स्ट इन फ्यू डेज़. तो आप बने रहिए चैनल पे. तो अगर आप पहली बार यहाँ पे विज़िट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करना वीडियो को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.